Hello everyone, I welcome you all on the part 1 of the OBS gynae chanting. In this, we will be studying OBS early pregnancies issues. Okay, so the topic which we will be covering today is biochemical pregnancy, ectopic pregnancy, molar pregnancy or GTN, and abortion and anomalies and aneuploidies. All this topic will give you around 5 to 7 questions definitely. Okay, so do focus, they are very easy and you're going to learn it very comfortably. Okay, so let's start it. So first of all, as question is highly suspective on biochemical pregnancy, let us see what biochemical pregnancies is. They give you a clinical scenario and they say कि UPT पॉजिटिव आ गया है. ठीक है, यूपीटी पॉजिटिव आ गया है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन हो रहा है एंड अल्ट्रासाउंड और एग्जामिनेशन पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है प्रेगनेंसी कहाँ है. वंस अगेन, what clinical scenario they give you? That patient's UPT is positive, okay, at home or in the hospital, and patient is having pain abdomen. Okay, sometimes they say patient also has spotting also, but now nothing can be diagnosed on ultrasound. On ultrasound, no adnexal mass is there and no intrauterine gestational sac is there. Okay, and no, nothing is found on examination. On examination, everything is normal, no NXL mass is found. And what is the sign of intrauterine pregnancy? The size of the uterus increases, that is also not increased. Now what you will do for this pain abdomen with UPT positive? Okay, so first of all, I want to tell you that there can be three diagnoses at this stage when UPT is positive and patient is having pain. Number one, it is a normal intrauterine pregnancy. Number two, it is a ectopic pregnancy. Number three, it is a abortion. Okay, so to differentiate which pain it is, whether it is a intrauterine pregnancy and patient is just sensitive to the changes in the body of the intrauterine pregnancy, or it is a ectopic pregnancy, patient was having a very small mass that could not be detected on ultrasound and examination, or it can be a number three is it's a abortion, the pregnancy is failing, that is why patient is having pain. Okay, so now when fertilization occur, the next step is beta hcg increases. Once the beta hcg value is more than 3500, then only any gestational sac on ultrasound comes or any examination finding comes. So the criteria which is for the ultrasound finding is beta hcg value 3500. Before that, nothing is available, nothing we get on ultrasound. Okay, so if beta hcg value will increase more than 3500, then only some ultrasound finding is found. So this condition in which the beta hcg is positive and no pregnancy is found on ultrasound or examination, this condition is known as biochemical pregnancy. Okay, now for to diagnose out of these three condition which condition it is, we will get this beta hcg done, two beta hcg values and in on a gap of 48 hours. Okay, if the value increase and doubles in 48 hours, then it is a intrauterine pregnancy. And if this value increase and does not double in 48 hours, okay, it increases, beta hcg increases. I told you that we will get two beta hcg done at a gap of 48 hours. If the value of these two beta hcg, the second value of beta hcg has increased but it hasn't doubled in 48 hours, then it is ectopic pregnancy. The reason is that in ectopic pregnancy or in the fallopian tube implantation,
The conditions are not as good as uterus, so beta hcg increases, but it does not increase at a normal speed. The third reason is abortion. If the beta hcg, second beta hcg value, it decreases, it means beta hcg production is decreasing, it means the pregnancy is failing, it is a case of abortion. So only what they want to know is, when patient come with you with such a clinical scenario, the next step will be differential diagnosis by serial beta hcg estimation. If one beta hcg is done, then the another beta hcg has to be done. Okay, and if only upt is done, then you will say serial beta hcg estimation. Okay, I hope it is clear. Okay, now let's go to the ectopic pregnancy. See, in ectopic pregnancy, what all symptoms the patient gave is, it is a case of early pregnancy, and patient come with spotting and pain abdomen, right? There is a adnexal mass, there is a tubal pregnancy, so that tubal pregnancy stretches the peritoneum and patient feels pain. Okay, similar symptoms are there in abortion also: early pregnancy, spotting and pain abdomen. Okay, so how we will differentiate this unruptured ectopic and pain abdomen? By transvaginal ultrasound or by examination. Okay, on the transvaginal ultrasound, if it is intrauterine pregnancy, it means it is a case of abortion, and if it is a tubal pregnancy, then it means that it is a case of a, if there is a adnexal mass, then it means that it is a case of the ectopic. Okay, got it. Okay, now if the ectopic ruptures, then what happen? That tube gets tear, tube फट जाती है जब एक्टॉपिक रप्चर होती है ना, क्योंकि जो प्रेगनेंसी ट्यूब में थी वो स्ट्रेच करती है ट्यूब को, और फिर उसको एक लिमिट के बाद जब वो प्रेगनेंसी एक टाइम से ज़्यादा हो जाती है, ट्यूब फट जाती है, और तो फिर जो है पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड, वहाँ जहाँ से ट्यूब फटी है वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड इकट्ठा होता है। तो इसका मतलब है रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ rupture ectopic pregnancy is a emergency, because lot of peritoneal hemorrhage is lot of bleeding is occurring from the ruptured tubal side. So only one condition in the medical science: if a patient of early pregnancy is coming with spotting and pain abdomen and shock, then you will not think of abortion. Abortion never present with shock. Okay, abortion never present with shock. If a early pregnancy patient is coming to you with shock, you will, it means it is a ectopic, it is a life threatening condition, and when you have to get the patient laparotomy done and stop that bleeding. Okay, examiner want this thing, that you all should know this thing. If in early pregnancy a patient is coming with shock, it is not a abortion, it is not anything else, it is just a ectopic, and it is a time for a doctor to save the patient life. Okay, if in the ectopic, if in the early pregnancy a patient comes with shock, it is a ectopic pregnancy, and that also ruptured. Patient is going in shock, hemorrhagic shock, hypotensive shock, so it needs a surgical laparotomy. Let's see the other what there is. Now once a patient has come to you, you will rule out the risk factors, isn't it? So what are the risk factors? Two main risk factors of ectopic pregnancy is, the most risk factor which increases the chance a lot is the history of
previous ectopic. If there is previous ectopic, high chances are there that the another pregnancy will also be ectopic. And number second thing which you will rule out is history of pelvic infection, PID, salpingitis. See, now ectopic pregnancy is there, or you all know that fertilization occurs in the tube. The etiology behind the ectopic pregnancy is tubal diseases. There is some problem in the tube which is not letting the zygote to move and get into the uterus and get implant. You have to see what risk factors are there. Okay, so number one is history of previous ectopic, which is having high chances. Number two is pelvis infection, PID leads to salpingitis, and it stops that zygote to go and implant there. Okay, hinders that movement, and then ectopic occurs. Number three is history of infertility and infertility treatment. You all know infertility patients, they can have tubal diseases, right? The tubal factor is responsible for infertility. That is why history of infertility and infertility treatment. Next is history of tubal surgeries. If there is recanalization of tubectomy, or tubectomy is done and there is tubectomy failure, then high chances are there that scar on the tube will not let that zygote to move and implant. So history of tubal surgery. And number fifth is history of failed contraception. Whenever there is contraception failure, then we have to rule out whether or not it is a ectopic. Okay, but this history of failed contraception is, I have put this on the last number. Why is it so? Because when a lady is using contraception, then chances of pregnancies are very less, right, whether it is using copper T, or whether it is using progesterone only pills, or whether combined oral contraceptive pills. So the chances of pregnancies itself very less. What is their Pearl index? 0.5, 0.6, right? What is the Pearl index of tubectomy? 0.1, right? So itself the chances of pregnancy become very less. But just you have to keep in mind that we have to rule out if there is any history of failed contraception, that whether it is ectopic or not. Just this you have to keep in mind. But it is a very least important risk factor, that is I have put in the last, because pregnancy itself doesn't occur when one is using contraception. You all know Pearl index of contraception is very good, right? Okay, now these were the risk factors. So once a patient came to you with which conditions? Uh, Early pregnancy, spotting, and plain abdomen. You get a TVS done, and if it is shock, you have identified that it is a ruptured ectopic, and then you ruled out this risk factor. What you will do next? You are going to manage that patient. Of course, if it is ruptured, you are going to resuscitate, no doubt in that. Now if it is unruptured, we have a medical management also. If it is unruptured, we have a medical management also. Okay, the medical management is, we give the injection methotrexate. But we have to see whether this patient is suitable for giving injection methotrexate or not. We have to see that. So see, injection methotrexate take 1 or 2 days to act. Okay, injection methotrexate take 1 or 2 days to act. So before giving that methotrexate, we have to see whether the tubal pregnancy will rupture or not in 1 to 2 days. Okay, because once the pregnancy get ruptured, then we have to do laparotomy and stop that bleeding site, right? Once the tube has ruptured, fallopian tube has ruptured, then we have to do salpingectomy, because then tube cannot be saved, because tube had torn, ट्यूब फट गई है. अब ट्यूब को बचा तो सकते नहीं, अब तो साल्पिंजेक्टमी करेंगे, और साल्पिंजेक्टमी जैसे ही करेंगे ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगी. ठीक है,
तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्यूब सेविंग सर्जरीज तब तक ही करनी है जब तक जो है प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई, ठीक है। और बिकॉज दिस मेडिकल मैनेजमेंट इट टेक्स 1 to 2 days, so we have to see that whether this pregnancy will rupture in those 1 to 2 days or not. So early pregnancy they don't rupture, right? Early pregnancy they don't rupture. So what is the criteria to see that whether pregnancy will rupture or not, or we have to see whether it is small pregnancy or not, ठीक है। So a small pregnancy will not rupture. So small for to diagnose it is a small pregnancy, the criteria which is given: gestational sac should be less than 4 mm. Gestational sac should be less than 4 mm. If it is less than 4 mm, it means there is less tendency for this pregnancy to rupture in 1 or 2 days. So we will give injection methotrexate. Okay, beta hcg less than 3000. Okay, so once if you forget this, just remember 3 4 3 4. Okay, 3 4 3000 beta hcg. Gestational sac 4 mm. If the values are less than this, we will give medical management. Okay, if these values are more than this, we will do surgical management. The other two conditions which you all know is FHS should be absent. If FHS is present, then what is the pregnancy time? It is somewhat between 5 to 6 weeks. It means it is a big pregnancy, right? So FHS should be absent. If FHS is present, it means it is a big pregnancy. More period of gestation is there. So we are not going to give methotrexate when FHS is present. FHS should be absent. And number fourth is unruptured, that do you all know. So if you forget this criteria, so how you will remember? 3 4. Beta hcg should be less than 3000 in international unit per liter or MIU per liter per ml. So and gestational sac less than 4 mm. Okay, gestational sac less than 4 mm. Okay, so this was the criteria. Okay, if it does not meet this criteria, then what we will do? We have the for unruptured, we have a surgery salpingostomy. In this we make a os in the tube. Suppose this is tube, we make a os in the tube, and what we do? We make a os in the tube. Oh, see, and we take out that tubal pregnancy and we close it. We are not going to stitch that os. Okay, so we make a os or a opening. That is why it is known as salpingostomy. But it is again going to be done in unruptured tubal pregnancy. Why? Because unruptured tubal pregnancy में ही tube फटती नहीं है. Because in unruptured only the tube doesn't get tear. Once the tube has teared, then how we can save the tube? Tube has been destroyed. Then we will do salpingectomy. Okay. There were two procedures done primitively, traditionally, milking of the tube and salpingotomy. They both are obsolete, so don't get interest in that procedure. Okay, now next is what are the investigation which we get done. The most reliable investigation is transvaginal ultrasound. Please note, it is not abdominal, because small pregnancies are seen very nicely on the vaginal ultrasound. Okay, because small pregnancies are seen nicely in the vaginal ultrasound. The magnification is much better of the uterus on vaginal ultrasound. On vaginal ultrasound, what we will see? We will see that there is no intrauterine pregnancy. Uterus size is very normal. So what will be there in the uterus? Trilaminar endometrium, right? And in adnexa there is a adnexal mass.
In adnexa, there is a adnexal mass, and in the uterus, there is no gestational sac. Okay. Examination. What we will get on examination, if it is a unruptured case, on PA we will, if it touch the adnexas or the palinguinal regions, we will feel light tenderness if it is unruptured. In the area where there is adnexal mass, right or left adnexal mass, wherever it is, there if we touch, we will get slight tenderness. PA will be soft because it is unruptured, but only tenderness in that particular adnexal region. On PV, uterus size will not increase because pregnancy is not uterine pregnancy. Pregnancy is a tubal pregnancy. So on PV, uterus will be normal size, and adnexal mass, wherever it is, it will be felt in the fornix. In the fornix, adnexal mass will be felt. Okay. And if it is ruptured, then I already told you tube will tear. Tube will tear in the ruptured. Then what will happen? The whole peritoneal cavity will be filled with blood. So on PA, there will be tenderness, guarding, rigidity all over. Wherever we will touch the abdomen, there will be these three symptoms: tenderness, guarding, rigidity all over. Okay. On PV, the uterus will be of normal size again, but now there will be cervical motion tenderness. This is very important. Cervical motion tenderness. Cervical motion tenderness is seen in two conditions in obs gynae or in whole medical science. Number one is ectopic, and number two is chronic PID. That worsen PID. We will learn it in PID, don't worry. You just learn here. If it is ruptured pregnancy, then there is cervical motion tenderness. Why there is cervical motion tenderness? There is cervical motion tenderness because there is blood in the peritoneal cavity. Now, because there is blood in the peritoneal cavity, when we will move the cervix by our finger, when we are doing the PV, we are moving the cervix by our finger, then what will happen? The cervix movement will irritate the peritoneum, and that will cause pain. Blood in the peritoneal cavity is there. When we move the cervix, peritoneum also move with that. Pouch of Douglas also moved with that, and that irritates the peritoneum more. So there will be cervical, on moving the cervix, there will be increased pain. Okay, this is known as cervical motion tenderness, which means on moving the cervix there is pain. And there will be, what will happen in ruptured pregnancy in the fornices, there will be bilateral adnexal fullness because blood is collecting in the peritoneal cavity. Okay, is it clear? Okay. Now some one liner. We have done the ectopic pregnancy also. So you know that most common area of most common area where the ectopic pregnancy occurs is the tube, fallopian tube. And fallopian tube has three parts: interstitium, isthmus, ampullary, and infundibulum. ठीक है, and infundibulum. So this fallopian tube has four parts. Now we are going from the uterus to the ovary side. Okay, the first part is interstitium. In interstitium, if ectopic pregnancy occurs, it ruptures very late because interstitium is supported by myometrium. And if the ectopic pregnancy occurs in isthmus, it ruptures earliest because this is the second most narrowest part. First most narrowest part is interstitium, but interstitium pregnancy ruptures very late because it is supported by myometrium. Which pregnancy ruptures late? Interstitium.
Okay, then isthmus pregnancy rupture earliest because it is the second narrowest part. It is very narrow, so tube give up very easily and get teared. Okay, the most common site of ectopic pregnancy is ampulla. Why? Because this ampulla has many mucosal fold which gets infected very easily. Okay, so most common site of ectopic pregnancy is ampulla because this ampulla has many mucosal fold. Okay, and this ampulla has many mucosal folds, so it gets this mucosal fold, they get infected very easily. So this is the most common site of ectopic pregnancy. Okay, now ovarian pregnancy, one thing more, ampulla is the site of fertilization also. Okay, so ampulla is the site of most common site of genital TB also. Okay, so now second most common site is ovarian. Ovarian, what is the criteria to diagnose ovarian pregnancy? It is Spiegelberg. Abdominal pregnancy is study form. ठीक है, so how I remember, ठीक है, I forget the things very easily. ठीक है, so how I remember is that the uh, the people who study, they get obese very easily. So studiform abdominal, ठीक है, once they obese and their diameter in abdominal waist increases. Okay, so studiform, one who studies is gets the abdominal pregnancy, and ovarian is Spiegelberg, one who gives smart specialized study, then their abdomen doesn't increase. Ones who take care of their health also while studying, then their ovaries remain healthy. Okay, so Spiegelberg is one in which the ovaries or remain healthy, is a Spiegelberg criteria in the case of ovarian, and abdominal is studiform. Okay, सर्वाइकल प्रेगनेंसी क्राइटेरिया इज पालमैन रूबिन. ठीक है, द एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, एज देर इज लॉट ऑफ स्पेस इन द एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, इट डज नॉट रप्चर till 40 weeks. Okay, and if there is cervical pregnancy, whenever we will do PV or whenever in the early pregnancy, the patient will bleed a lot, पूरा ब्लड हो जाएगा, पूरा पालमेन ब्लड रेड, पूरा पालमेन ब्लड रेड, आरबीसी रूबिन. ठीक है, दैट इज पालमेन एंड रूबिन क्राइटेरिया. देयर इज मासिव ब्लीडिंग इन अर्ली pregnancy. Okay, so that was about ectopic pregnancy. One last thing, what is heterotropic pregnancy? Heterotropic pregnancy means ectopic pregnancy plus intrauterine pregnancy. Ectopic pregnancy plus intrauterine pregnancy. So here we will ask the patient whether you want to save that intrauterine pregnancy or not. If patient wants to save that intrauterine pregnancy, then we will not give medical management, because medical management will kill both intrauterine and the ectopic pregnancy both. Okay, because usually this heterotopic pregnancy, it occurs in an IVF cases. So patient wants to save that intrauterine pregnancy, so what we do, we will do salpingectomy, and that intrauterine pregnancy progresses very easily. Okay, so this can be asked, what is heterotropic pregnancy? Heterotropic pregnancy means there are two pregnancy. There is also ectopic pregnancy and there is also a intrauterine pregnancy. So if the patient wants to save their intrauterine pregnancy, then we will not give medical management. If the patient wants to don't want to save that intrauterine pregnancy, then we will give the medical management. And if patient does not want to save, then what we can do is, we can give the surgical management to the ectopic pregnancy. Okay, now we will study the gestational trophoblastic diseases. Now what happens in the gestational trophoblastic diseases? What clinical scenario they give you? What clinical scenario they give you in gestational trophoblastic diseases? See,
in a early pregnancy, not that 6 8 weeks, early pregnancy means here 12 to 18 weeks, patient will have bleeding. Okay, 12 to 18 weeks, around a week, patient will have bleeding. Okay, and we will send the patient, we will have in mind that patient is having abortion or threatened abortion or incomplete, whatever it is, and we will examine the patient, we will send the patient for ultrasound, and it will come out to be snowstorm appearance. There will be written on ultrasound snowstorm appearance. It means it is a gestational trophoblastic diseases. Sometimes they give you that it is a patient of early pregnancy with bleeding and there is increased fundal height, doughy feel, doughy means आटे जैसा feel, there is hyperemesis, there is early onset preeclampsia and thyrotoxicosis. Okay, or they can also give you that there is the theca lutein cyst in it, there is theca lutein cyst in it. Okay, now why all this happens? There is hyperemesis, there is early onset preeclampsia, there is thyrotoxicosis and theca lutein cyst. See, there is, as the name suggests, gestational trophoblastic diseases. Problem here is in the trophoblast. Okay, problem here is in the trophoblast. What is happening? This trophoblast is proliferating and undergoing and get the water engulfed inside, अपने अंदर पानी को चूस लेती है ट्रोफोब्लास्ट। एक तो हाइपर प्रोलिफरेट करती है और अपने अंदर पानी को चूस लेती है। ऐसी क्यों हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, पर अभी एक बार के लिए इतना समझ लो। अब वो ट्रोफोब्लास्ट जब ज़्यादा बनती है तो HCG ज़्यादा बनता है। When trophoblast proliferates, more HCG is formed. Once more HCG is formed, then what happens? Once more HCG is formed, then what happens? There is hyperemesis because HCG causes vomiting, right? Do you remember? HCG causes vomiting. When there is hyper HCG, more vomiting is there. Then why there is early onset preeclampsia? Due to the vasospasm. Okay, now this abnormal trophoblast cells, they are not capable to remove the, normally what happens in pregnancy, the trophoblast cells, extravillous trophoblast cells, you will focus here, this is a question of NEET PG 22, can come in your exam. ठीक है, when what happens in a normal pregnancy, the extravillous trophoblast, विलस ट्रोफोब्लास्ट तो विलाई बना लेते हैं, ठीक है, विलाई बना देते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, वो जाके जो है ट्यूनिका मीडिया ऑफ स्पाइरल आर्ट्रियोल्स को रिमूव कर देते हैं। स्पाइरल आर्टरीज यूट्राइन आर्टरी की वो ब्रांच है जो एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ को सप्लाई कर रही है, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट उसकी ट्यूनिका मीडिया को रिमूव कर देते हैं ताकि ब्लड पूरा आराम से, फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड आराम से एक्सचेंज हो सके, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाती है, तो बड़े आराम से जो फीटस का ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होके वापस चला जाता है प्लेसेंटा में, ठीक है, तो ये सब होता है। अब ये सब क्योंकि ये एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट है तो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज में नहीं होता है, ट्यूनिका मीडिया नहीं रिमूव होती है, तो पूरी सर्कुलेशन में वाजोस्पाज्म हो जाता है, ठीक है, ये कारण है ये अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्सिया का। थायरोटॉक्सिकोसिस क्यों होता है, क्योंकि HCG मिलता जुलता है TSH, thyroid stimulating hormone से, that is why thyrotoxicosis is there. Then why there is theca lutein cyst? Theca lutein cyst is there because HCG is structurally and functionally similar to LH. ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन है, NICT 21 में आया हुआ है, आपके जरूर आएगा, बेसिक से रिलेटेड है। HCG इज स्ट्रक्चरली, HCG के 2 यूनिट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो एक यूनिट सिमिलर है LH के, ठीक है, तो वो HCG बढ़ता है और वो काम भी LH जैसा करता है HCG, तो वो जाके थीका सेल्स ऑफ ओवरी में, ओवरी के फॉलिकल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल और थीका सेल, तो वो थीका सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है और वहाँ थीका ल्यूटेन सिस्ट बन जाती है। तो डू यू गॉट व्हाई देयर इज थीका ल्यूटेन सिस्ट?
देयर इज थीका ल्यूटिन सिस्ट, बिकॉज HCG का काम LH जैसा होता है और वो जाके थीका सेल्स को स्टिमुलेट करता है और थीका ल्यूटिन सिस्ट बन जाती है. तो ये सारे अगर फीचर्स हैं तो ये क्लियर है कि इसकी बॉडी में HCG ज़्यादा बन रहा है और कुछ ट्रोफोब्लास्ट में प्रॉब्लम है और वो फिर मोलर प्रेगनेंसी ही होगी. ठीक है, क्लिनिकल सिनेरियो क्लियर हो गया. आप लोग अब डरोगे नहीं ना क्लिनिकल सिनेरियो से. ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले क्लिनिकल सिनेरियो डालती हूँ. ठीक है, okay, next, why this happens? I told you we will discuss it, why it happens. Normally, only one sperm fertilize one ova. What will happen if two sperm will fertilize is ova? What will happen? ट्विन्स विल नॉट अकर. नो, ट्विन्स में क्या होता है, टू स्पर्म फर्टिलाइज टू ओवा. टू स्पर्म फर्टिलाइज टू ओवा इन ट्विन्स. one ova is not getting fertilized with two sperm. When one ova get fertilized with two sperm, then this molar pregnancy occurs. Okay, so now see, in the first condition, when there is complete mole is there, then this ova is having, why I put in this question mark, it means that there is no nucleus in this empty ova. Two sperms are fertilizing the empty ova. There is no nucleus, khali hai andar se. Okay, so then when this two sperms fertilize the empty ova, then what is formed is complete mole. Okay, now why it is known as complete mole? Because here no fetus is formed, because there is no mother nucleus, no fetus. That is why only known as complete mole. Okay, now this abnormal zygote which doesn't have mother nucleus or maternal nucleus and has two sperms will be diploid, because two sperms are there, diploid, and mother nucleus was empty, it will be diploid, and both the sperms will be, both the sperms will have paternal genotype. So it is asked, don't forget this. Complete mole means no fetus. No fetus means no mother nucleus. No mother nucleus means two sperms or genotype. Two sperm genotype means diploid and only paternal. So now we come to the other condition. When two sperm fertilize is a mother nucleus, nucleated ova. Now this time this is not empty. Okay, this has nucleus in it. This has nucleus in it. Two sperms are fertilizing. Okay, now what will be formed will partial mole. Now here these villi, they will be abnormal because two sperms are fertilized, right? And these villi will be, of course, they will be abnormal. Plus what will happen? Yes, fetus will be also formed because mother nucleus was there, and because this is why it is known as partial mole, because fetus is also formed and abnormal villi are also there. Okay, why fetus is also formed, abnormal villi are also there. Now this is a partial mole, and what is happening here? It will be triploid, mother nucleus and two sperm nucleus. So partial mole means, speak out with me, partial mole means mother nucleus is there, two sperms, three nucleus, triploid, and partial nucleus has both maternal and paternal genotype. And what will be it? It will be 46XX. More are the X chromosome, more are the chances of molar pregnancy. So more, this partial mole will be 69 triple X. Okay, now you see that now when two sperm fertilize, then there is formation of abnormal embryo, because normal embryo is one sperm one ovum. Now two sperm means abnormal embryo forms abnormal trophoblast. Now these trophoblasts, they proliferate
more and more they proliferate, and then they engulf water, पानी चूस लेती हैं अपने अंदर, hydropic villi. And these villi, when they engulf the water, become hydropic, they become cyst in the ultrasound, and that is known as snowstorm appearance. Okay, then that is known as snowstorm appearance. See here, this is snowstorm appearance. See, what is this? These are nothing. These are villi which have engulfed the water, and they are looking a small or large cyst. See, what is snowstorm appearance? You all know on ultrasound fluid, water looks like black, and this placental tissue is looking like white. So this white part is villi, and this black part is the fluid which they have engulfed, और जो पानी चूसा है वो क्या है, ब्लैक है, एंड वाइट क्या है, जो फिलाई है. तो इस तरह से छोटी छोटी फिलाई दिखते हैं, जिसको हम स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिखते हैं. वाइट ब्लैक दिखता है, जो हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस लगता है. ठीक है, ओके. So now they give you options, these 7 options they give you. Okay, so what you do, you exam में we remember कि yes, molar pregnancy there is snowstorm appearance. Only this snowstorm appearance is, dear students, it is only in complete mole. Okay, we will not mark it in choriocarcinoma. Choriocarcinoma, what is choriocarcinoma? Choriocarcinoma is when this molar pregnancy, after 5-6 months it changes into, or 5-6 weeks it changes into a cancer, a neoplasia. Choriocarcinoma is a neoplasia. Choriocarcinoma doesn't mean molar pregnancy, so you will never mark snowstorm appearance in choriocarcinoma. Okay, snowstorm appearance is in the complete mole. Why snowstorm appearance is not in the partial mole? Because in partial mole fetus is also there. Some part of it will show snowstorm appearance, some part will show fetus. So that is why in partial mole also you are not going to mark. Okay, if you have complete mole there in the option, then complete mole is a better option. Okay, in snowstorm appearance question you will always see all the option. If complete mole is there, you are going to mark complete mole, you are not going to mark partial mole. Okay, invasive mole is again a carcinoma, a neoplasia. Don't confuse invasive mole as another name of complete mole. Invasive mole is a malignant stage, neoplastic stage. Okay, placental site trophoblastic tumor is also a malignant stage. These three are malignancies: choriocarcinoma, invasive mole, and placental site trophoblastic tumor. These are trophoblastic malignancies. These are not complete mole, so don't confuse. Okay, complete mole only has the snowstorm appearance. What are the another name of complete mole? Vesicular mole, because vesicles are formed here, right? What is the another name of the complete mole? H mole, hydatid form mole. Okay, okay. Now let's see the difference between partial mole and complete mole once more. In partial mole, 2 sperm fertilize the nucleated ova, so triploid it is. In complete mole, 2 sperm fertilizes the empty ova, it is diploid. Fetus and hydropic villi both are seen in the partial mole. In the complete mole, only hydropic villi is formed. So because fetus is there and abnormal hydropic villi are there, it more stimulates. Fetus is always dead in it. Okay, so it stimulates like a missed abortion. Okay, partial mole looks like missed abortion, and complete mole ultrasound picture is like snowstorm appearance. So it has partial mole has very low malignant potential, whereas complete mole has very high malignant potential. Okay, whenever there is mother nucleus present, then immunostaining P15 P57 and KIP2 are positive. ठीक है,
P57 and KIP2 are positive, and P57 KIP2 staining, if it is negative, it means mother nucleus was absent, it means it is a complete mole. Okay, I hope you understand this. Let's go to the treatment. What is the treatment of this? You have to learn this treatment in 3 steps. You will say all this step simultaneously. Okay, number 1, suction evacuation. No DNC, no mesoprost, prostaglandins, nothing. Okay, suction evacuation, because large vesicles are there, they can be only removed by suction evacuation. Plus, now you know that this gestation molar pregnancy can change into a malignancy. So beta HCG follow-up is must. Every week beta HCG follow-up is done for 6 months. It is done every week till the values get normal for 3 times. And once the values get normal for 3 times, then we do it monthly. So beta HCG follow-up is for 6 months. So question come here. Serial beta HCG estimation is done in, and in options they give you ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy may we only do it 2 times. Here we are doing it many times till 6 months. At least we do 20 beta HCG sampling. So serial beta HCG is not done in. Speak out with me. Serial beta HCG is, if you have 2 choices, ectopic or molar pregnancy, what you will mark? Serial beta HCG is done in molar pregnancy. In ectopic pregnancy, we do only 2 beta HCG after 48 hours, right? But in this case, we are doing how many beta HCG? We are doing weekly till the beta HCG they get normalized, and once they get normalized, still we are doing it monthly till 6 months. Normally the beta HCG they get normal in at what time? If it is a partial mole, then they will get normal in 7 weeks, and if it is a complete mole, they will get normal in 9 weeks. Okay, so you can average, you can remember in 2 months they get normal. So up till 2 months we get every week, and after the 3 normal values we get it then monthly till 6 months. Okay, and then contraception is given for 6 months. Why contraception is given? Third treatment it is contraception. Why contraception is given? Because pregnancy also increases pregnancy also increases beta HCG. So we don't want to confuse whether this is malignancy beta HCG or pregnancy beta HCG. So we tell the patient, don't conceive, we want to diagnose your malignancy if it is there. Okay, so what contraception we give? We give combined oral contraceptive pills. Copper T are contraindicated. Why they are contraindicated? Because uterus is soft in molar pregnancy, it perforates. Okay, this was a question of NEET PG 22. Copper T is contraindicated in option. There was trophoblastic diseases. Okay, so questions are asked like this. Okay, so whenever you will tell the treatment, you will tell it in 3 steps. Suction evacuation, number 1. Number 2, follow up beta HCG for 6 months. Number 3, contraception, combined oral contraceptive for 6 months. Copper T contraindicated. Okay. Now we will study gestational trophoblastic neoplasia. Okay. What all patients have risk that this complete mole, you know that complete mole have high malignant potential, but you should know which complete mole has high chances of becoming gestational trophoblastic neoplasia and which complete mole have less chances. Then only you will be good doctor. Right, so the 5 factors which in which the complete moles have high chances of becoming neoplasia, they are asked. Okay, you are going to learn here only. Age more than 40 years, beta HCG values more than 1 lakh, uterine size more than gestational age, bilateral thecal lutein cyst, slow decline in the beta HCG level after suction and evacuation. ठीक है, बीटा HCG को पड़ी हुई है बढ़ने की. ठीक है, बढ़े जा रहा है बीटा HCG बढ़ेगा
तो उसकी वैल्यूज मोर देन 1 लाख होंगी। बीटा एच सी जी बढ़ेगा तो यूट्राइन साइज बढ़ेगा, बीटा एच सी जी बढ़ेगा, थीका ल्यूटिन सिस्ट बढ़ेगी, थीका ल्यूटिन सिस्ट बनेगी, और बीटा एच सी जी बढ़ेगा तो बीटा एच सी जी डिक्लाइन धीरे होगा। ठीक है, जिस बीटा एच सी जी को बढ़ने की पड़ी हुई है वही बीटा एच सी जी तो न्यूप्लेसिया बनाएगा, राइट। ओके, एज मोर देन 40 years, बेटा इन दिस ना दे गिव यू कि इफ द पेशेंट हैव hyperthyroid, so we learned that in the starting, yes, beta hcg also stimulates like tsh, but thyroid, if there is hyperthyroid, then there is no chances of choriocarcinoma or neoplasia. Okay, so thyroid is not here in the list, I'm telling you. Okay, so you will get it in your mind. So these are the 5 factors. Once again, number 1 is age, more than 40 years. Number 2 is beta HCG values, more than 1 lakh. Uterine size. Number 3 is bilateral theca lutein cyst. And then beta HCG declining slow. Okay? Okay. Now we will study gestational trophoblastic neoplasia. Gestational trophoblastic neoplasia, they are of 3 types. One is choriocarcinoma. Okay, in choriocarcinoma, yes, the HCG increases and the treatment is chemotherapy. Okay, this is a very diseases with very poor prognosis, but once chemotherapy is given, it recovers like this. ओके, चुटकियों में रिकवर होती है। तो कीमोथेरेपी में टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सेव 1 लाइफ, और नहीं दिया तो बहुत जल्दी पुअर प्रोग्नोसिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया इज इन्वेजिव मोल, इट्स अनदर नेम इज कोरियोएडिनोमा डिस्ट्रुएंस, हियर ऑल्सो HCG इंक्रीजेज and its treatment is surgery. The third one type is placental site trophoblastic, here only cytotrophoblast proliferate, so HCG doesn't increase, HPL increase, and here the treatment is surgery. Okay, the next is few one-liners about the choriocarcinoma. Choriocarcinoma is metastasized very fast, that I told you, very bad prognosis, and most commonly it metastasizes to lung, but the lung, as it metastasizes so fast, it doesn't have so bad prognosis, so lung is kept in stage 3, it is not kept in stage 4. In all the other cancers, lungs is in stage 4, but here the lungs is in stage 3. Okay, and if the you know that the choreo, you know that a normal delivery we can also become a trophoblast. After normal delivery, trophoblastic tumor can also become. After abortion, trophoblastic tumor can also come, right, right, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी और अबॉर्शन में भी तो ट्रोफोब्लास्ट बनता है ना। अब फिर वो अगर न्योप्लास्टिक हो जाए तो वो फिर कोरियोकार्सिनोमा बना लेता है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद कोरियोकार्सिनोमा बना है, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा बैड प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, ये वन लाइनर है, बहुत आता है। आप लोग हमेशा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आई एम गेटिंग ओनली 30% करेक्शन रेट, तो आप इसको अभी याद करो। नॉर्मल डिलीवरी और अबॉर्शन के केसेस भी रेयर चांसेस में, ठीक है, कोरियोकार्सिनोमा बन सकते हैं। ठीक है, उनके ट्रोफोब्लास्ट भी प्रोलिफरेट होके नियोप्लास्टिक कंडीशन बना सकते हैं लेस देन 1% में। ठीक है, लेकिन जो है अगर बनता है तो उस कोरियोकार्सिनोमा का बहुत बुरा प्रोग्नोसिस होता है। किसका? नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो कोरियोकार्सिनोमा बनता है। मोलर प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के बाद जो कोरियोकार्सिनोमा बनता है उसके कंपैरिजन में नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो कोरियोकार्सिनोमा बनता है उसका बहुत बहुत बुरा प्रोग्नोसिस है। ओके, okay, these are the one liners which are asked, so I've kept it here. The treatment of choriocarcinoma is chemotherapy. If it is a low risk score, WHO prognostic score is less than 7, then we are going to give many doses of methotrexate only. One agent is sufficient. बार बार बुला के पेशेंट को methotrexate देते रहो। ठीक है, my one friend also had this choriocarcinoma after abortion, and she is very fine. Okay,
So we admitted her many time. I only admitted in my hospital, and we give many doses of methotrexate. She was in the low risk score, and if one is in the high risk score, then we have to give imaco, multiple doses. Okay, etoposide, methotrexate, actinomycin, cyclophosphamide, oncomin. Okay, 5 drugs chemotherapy we have to give. Okay. Now let's come to the another topic, anomalies. Okay, what is anomalies? Okay, anomalies, there are mainly two anomalies: neural tube defects and anterior abdominal wall defects. Okay, two main anomalies which are in our syllabus are these: neural tube defects and anterior abdominal wall defect. On this slide there is and neural tube defects. Listen, there are two type of neural tube defects. Listen carefully: anencephaly number one, and number two, spina bifida. My camera is coming. Okay, spina bifida. Okay, what do you mean by anencephaly? Anencephaly means that there is no cerebral hemisphere. सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो बड़े बड़े हमारे हेमिस्फीयर होते हैं वो नहीं है. एंड देयर इज नो क्रेनियल वॉल्ट. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेनियल वॉल्ट? ये स्कल बोन्स नहीं है, ठीक है. देयर इज नो स्कल बोन्स एंड देयर इज नो यस cerebral hemisphere. Two things are absent. ठीक है. Anencephaly's ultrasound picture is there on my telegram. Please go and see. Okay. So these two things are absent. So on ultra we can diagnose this anencephaly on in first trimester itself, because cranial bone is absent. So this round contour of the head will not be there. So we can diagnose it as early as 8 to 10 weeks. We can diagnose it as early as 8 to 10 weeks. We can diagnose it as early as 8 to 10 weeks on ultrasound. No need to go to that costly investigations. Which costly investigations? Alpha fetoproteins, double marker, triple marker. No need. On ultrasound, very early, 8 to 10 weeks, we can diagnose this. This question comes because now you imagine if my this skull bone is not there, my eyes will be big, and this thing is known as Mickey Mouse or frog eye appearance. Okay, Mickey Mouse, or what is there in the Mickey Mouse? The eyes are big of Mickey Mouse, right? We all have drawn in our childhood, right? So Mickey Mouse or frog eye appearance, Mickey Mouse face, because these things are absent. ठीक है, this forehead is absent, skull bones are absent, cerebral hemisphere is absent. So big eyes, big eyes, round big eyes. So that is known as Mickey Mouse and frog eye appearance, and here cranial vault is absent. Okay. Herniation, what is spina bifida? In the spina bifida, there is herniation through the spinal cord, right? There is herniation through the of the meninges of the spinal cord through the spinal cord. ठीक है, they herniates through the So now on in the brain there are banana sign and lemon sign. Banana sign and lemon sign in the brain, not in the spinal cord. On ultrasound, what you will see? The meninges and that spinal cord, that is herniating. Okay, right. And in the brain there will be banana and lemon sign. What is the treatment? This pregnancy you have to terminate. And this is a question of FMG June 21. Please listen carefully. What is the treatment? If this does not happen in next pregnancy, we have to give 4 mg folic acid, therapeutic dose which prevents neural tube defects in the another pregnancy. इस प्रेगनेंसी को तो हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा ना. इतना नॉर्मल बच्चा जिसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं है, कौन पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेंगे. 8 to 10 वीक्स पे हमें पता चल रहा है. सो वी विल
abort this pregnancy, right? But if to avoid these neural tube defects in the another pregnancy, next pregnancy, we will give prophylactically preconceptional, not after conception, preconceptional 4 mg folic acid for 3 months so that it does not occur. ठीक है, जब हम टर्मिनेट करते हैं ना तभी हम उसको खिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसका फॉलिक एसिड डोज पूरा हो जाए. प्री कंसेप्शनली फॉलिक एसिड फॉर 3 months. ओके, सो दिस इज वन थिंग. ओके, नॉर्मल फॉलिक एसिड की कितनी डोज होती है? What is the normal dose of folic acid? It is 0.4 mg. So when normal dose is 0.4 mg in the first trimester. When it is gives a history of neural tube defects, then we give 4 mg, 10 times. Okay, okay. Now this was about the neural tube defects. Neural tube defects, right? So we saw that we can diagnose anencephaly by the Mickey Mouse or by the frog eye appearance, absence of cranial vault and absence of cerebral hemisphere as early as 8 to 10 weeks. Okay, as early as 8 to 10 weeks. And in the case of meningocele or spina bifida defects, what we will get? We will get meningocele, herniation of spinal cord, or right. And next what we will get? Banana sign and lemon sign on the brain. The another type of defects are anterior abdominal wall defects. What happen here? The whole intestine, it comes out of the abdomen as hernia. So there are two type of defects. Number one is gastrochesis. Okay, number one is gastrochesis. Gastrochesis is para-umbilical defect. umbilicus से साइड में होता है. Okay, now if this is umbilicus, ठीक है, यहाँ साइड पे यूजली राइट साइड पे होता है. ठीक है, यहाँ से सारा all the intestine and all of it will herniate. Okay, and this is known as gastrochesis. Okay, so here everything is getting herniated. ठीक है, intestine and everything comes out here. Let me draw properly. All the intestine, it comes out. Sometimes liver also come out from the right side hernia. ठीक है, all the intestine. This is known as gastrochesis. Gastrochesis. ठीक है, and what is omphalocele? What is omphalocele? Here from below the umbilicus, the whole is coming. Here in the omphalocele, what all is coming is covered by. Here what all is coming out of the hernia, what all contents are covered, they are covered by peritoneum. Here they are not covered by peritoneum, so I have tried to show you the intestine. Okay, here they are covered by here again the treatment is termination. Here again in both the cases the treatment is termination. Of course we can diagnose them on ultrasound, but there are some biochemical markers also for these conditions. That biochemical markers is alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein, it increases here. Alpha fetoprotein increases in 4 condition. Mnemonic of it is Taran. T stand for twins, A stand for anterior abdominal wall defects. Number 3, R stand for renal. Number 4 is N stand for neural tube defects. So alpha fetoprotein increases both in the neural tube defects and anterior abdominal wall defects. ठीक है, so if we don't have a good radiologist
and we can get the alpha fetoprotein get check in the maternal serum, and if it has increased, then these four probabilities are there. Either it can be twins, Taran. T stand for twins, A stand for abdominal wall defects, R stand for renal anomalies, and stand for neural tube defects. If we want to differentiate whether this alpha fetoprotein is raised due to anterior abdominal wall defects or due to the neural tube defects, then we have one more test, and that is acetylcholine esterase. Acetylcholine esterase is the enzyme which is increased only in the neural tube defects. Okay, it is increased only in the neural tube defects. That all about the anomalies are done. Okay, just we had two slides. Number one slide was this, that neural tube defects, they are of two type, anencephaly and spina bifida. Anencephaly can be diagnosed as early as 8 to 10 weeks on ultrasound, because here the cranial vault is absent, cerebral hemisphere are absent, the appearance is Mickey Mouse or frog eye appearance. And spina bifida, on the ultrasound we will see herniating meninges and meningeal or meningocele, and in the brain we will have banana lemon sign. And this pregnancy we have to terminate, because such an abnormal child no one wants, and treatment is 4 mg folic acid preconceptionally for 3 months in the next pregnancy. Okay, and anterior abdominal wall defects, they are of two type, gastrochesis, which is a paraumbilical hernia, and omphalocele, which is a midline hernia, and in both the cases we can diagnose it on ultrasound, and alpha fetoprotein increases in both the anterior abdominal wall and neural tube defects, but acetylcholine esterase only increases in the neural tube defects. Okay. Now let us see the Down syndrome screening or anomalies. Aneuploidy. Now we will do the aneuploidy, the trisomies problem. Most common of them is Down syndrome. So we will discuss Down syndrome here. Okay. All women should be screened for Down syndrome. Okay. All women should be screened from Down syndrome, whether they are more than 35 or not. Yes. I also know, WHO also know, after 35 years increase chance of Down syndrome is there, but it is not that one is not in the young females Down syndrome child does not they are there. So every mother is going to get screened. It is criminal if we don't get them screened for Down syndrome. Okay, so every mother should be screened for Down syndrome. Okay. Now if that trisomy of 21, in Down syndrome there is trisomy of 21, if that trisomy is due to balanced translocation, then if the balanced translocation is present in one parent and another parent is carrier, then 100% reoccurrence will occur in the another child. We cannot prevent. Listen carefully. If balanced translocation, okay, what is balanced translocation? You are going to tell me in the comment section. Okay. So if there is balanced translocation in one parent and another parent is carrier of that balanced translocation, then 100% every pregnancy will have Down syndrome. I know a very famous family in which every child was Down syndrome, because all the males of that family were having balanced translocation. Okay, I know a family, every child was of Down syndrome. Some was affected mildly, some were affected more. They knew that whatever child will come to us will be Down syndrome, because the males in that family, they have balanced translocation. Okay, so 100% recurrence is there. Question are asked on this.
Okay, and yes, risk increases after 35 years because non-disjunction genetic defect increases after 35 years. Okay, now aneuploidies, how to screen for aneuploidies? I told you कि aneuploidies risk increases. Aneuploidy Down syndrome screening has to be done in all the pregnant mothers. How to do the Down syndrome screening, that also I will tell you. You will not become criminal. Okay, okay, so let's see. First trimester in 11 to 13 weeks, screening method, mind it, I'm telling you screening method. Okay, screening methods are two type of screening methods. One are biochemical, in which we take the mother's blood and we get the biochemical parameters done, and another method for the screening is ultrasound. ठीक है, so one biochemical parameter is there in the first trimester and one ultrasound parameter is there in the first trimester, and similar way one biochemical parameter is there in the test is there in the second trimester and one ultrasound test is there in the uh, one ultrasound test is there in the second trimester. Okay, now in the first trimester, the what is a biochemical test we do? At what time? We do it at 11 to 13 weeks. At the end of the first trimester, 11 to 13 weeks. Okay? And what is that test? First double marker. I am the one who forgets it. आज याद किया कल भूल जाती थी, तो मैंने कैसे याद किया? पापा बेटा, pape and beta hcg. Double marker is papa beta. Okay, ठीक है, they do ask you these questions. Papa beta, what are tested in what all markers are tested in double markers? What all markers are tested? pape, plasma associated, placental associated plasma protein A, and beta hcg. Okay, पापा बेटा डबल मार्कर. ठीक है, पापा बेटा की जोड़ी डबल मार्कर. And when it is tested, 11 to 13 weeks. Okay, then the ultrasound is NT-NB. What is NT-NB? Knuckle translucency. Knuckle translucency increase in Down syndrome. Nasal bone is absent in Down syndrome. Nasal bone is absent in Down syndrome. Knuckle translucency, knuckle translucency increase, nasal bone absent. Knuckle translucency, what is the value? More than 3 mm increases and its value is more than 3 mm. Okay, second trimester, what are the tests we do for screening? Till now we are only discussing screening. Okay, what are the tests we do in the second trimester? Triple marker or quadruple marker. What are the triple marker tests? पापा बेटा में से बेटा ले लेंगे. ठीक है, बीटा एच सी जी, टू पैरामीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एफ पी, वही एनॉमलीज वाला ए एफ पी. ठीक है, ए एफ पी एंड इनबिन ए, एंड द थर्ड इज इनबिन वाला ए, फिर unconjugated estriol, unconjugated estriol. In triple marker there is no inhibin, there are only AFP, beta HCG and unconjugated estriol. And in quadruple marker inhibin A is also there. In AIMS question has come whether it is inhibin A or B. अभी ध्यान दे लो. ठीक है, पापा बेटा वाला बेटा ले लिया, फिर दो ए वाले अल्फा पीटोप्रोटीन एंड इनबिन ए. इनबिन ए, इट इज ए नॉट बी. एंड थर्ड वन पैरामीटर इज unconjugated estriol. Okay, now we have 5 parameters: papa, beta, alpha fetoprotein, inhibin A, unconjugated estriol. इन पांचों में से दे ऑल्सो आस्क यू दिस क्वेश्चन, फोकस हेयर, कौन से बढ़ते हैं और कौन से कम होते हैं, तो इसका मतलब है डाउन्स है. ठीक है, व्हाट ऑल पैरामीटर्स दे इंक्रीज एंड व्हाट ऑल डिक्रीज, दिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड. देयर आर चांसेस दे कैन बी आस्क्ड टू यू. ओके, सिंपल, एच फॉर हाई, आई एन फॉर इंक्रीज. ओके, बीटा एच सी जी में एच है ना हाई, and IN inhibin का IN increase. These two parameters they increase
Rest all the parameters decrease in Down syndrome. HCG high, inhibin A high, rest all decrease. If these two parameters increase and rest all decrease, it means it is a Down syndrome. And this triple and quadruple markers, they are done at 16 to 18 weeks. Okay, okay. And then another is the ultrasound, which we do at 22 weeks, and this ultrasound is done at 22 weeks. And what are parameter we see? Cardiac defects, there are endocardial cushion defects, cardiogenic focus in there, we see increased knuckle fold, okay, then short limbs, ठीक है, and we get GIT defects, duodenal atresia, diaphragmatic hernia. So mainly there is increased knuckle fold in the second trimester ultrasound, increased knuckle fold thickness is increased, cardiac defects, GIT defects, and short limbs. These are the parameters we see on the ultrasound for screening the Down syndrome. Now, what is the test which we do in the first trimester? Chorionic villi sampling. Chorionic villi sampling, again it is done at 11 to 13 weeks. It is best to do at that. And amniocentesis is the test which you do in the second trimester to confirm. They are the diagnostic test, they confirm. We see कि ट्राइसोमी 21 की सही, यहाँ से हम chronic villi sampling और amniocentesis से we see that whether there is trisomy 21 or not. Okay, okay. So chronic villi sampling is done in the first trimester, is a diagnostic test, and amniocentesis is a diagnostic test at 14 to 16 weeks. ओके, वंस अगेन सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सारे पैरामीटर्स हम 11 टू 13 वीक्स पे करते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो है हम एमनियोसेंटेसिस सबसे पहले कर सकते हैं, ट्रिपल क्वाड्रपल मार्कर पे 16 टू 18 पे, और नकल अल्ट्रासाउंड हम 20 टू 22 वीक्स. ओके, now let's go to abortion. Okay, let's complete it fast. There are two types of abortion. One जो कपल अपनी मर्जी से करवाता है, induced abortion, और spontaneous जो अपने आप किसी प्रॉब्लम, किसी डिजीज़ की वजह से हो जाते हैं. So mainly there are two type of abortions in our syllabus. Number one is the first trimester abortions. First trimester abortions usually happen once, and the reason behind them is chromosomal abnormalities. The most common chromosomal abnormality is aneuploidy. Trisomies is the most common reason, and most common trisomy responsible for the first trimester abortion is trisomy 16. The another defect, second most common defect is monosomy. Monosomy is another defect, but if individually trisomy we take it, then trisomy 16 is the second most common, and monosomy is the first most, monosomy X is the फर्स्ट मोस्ट कॉमन. ओके, अगर इंडिविजुअली पूछते हैं, अगर सिंपली लिख देते हैं ट्राइसोमीज और मोनोसोमीज में से कौन सा कॉमन है, तो ट्राइसोमी, क्योंकि ट्राइसोमीज बहुत तरह की होती हैं, 16, 21, 13, 18 बहुत तरह की होती हैं. तो सारी ट्राइसोमीज इकट्ठी मिल जाती हैं तो मोस्ट कॉमन बनती हैं, और मोनोसोमी सेकेंड मोस्ट कॉमन बनता है. स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग यू, ठीक है, कि ट्राइसोमी 16 सबसे कॉमन होती है. ट्राइसोमी वो ज़्यादा कॉमन है या मोनोसोमी एक्स ज़्यादा कॉमन है? फिर मोनोसोमी एक्स ज़्यादा कॉमन है, और ट्राइसोमी 16 इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन. डायग्नोसिस, डाउन सिंड्रोम मत बोलना. डाउन सिंड्रोम इज नॉट द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनॉमली. ट्राइसोमी 21 इज नॉट, यहाँ 16 मोनोसोमी एक्स और ट्राइसोमी 16. ओके, डायग्नोसिस कैरियोटाइप से करेंगे, जो फीटस अबॉर्ट हुआ है उसमें देखेंगे, कैरियोटाइप देखेंगे क्या है, कौन सी ट्राइसोमी है. जो मोस्ट कॉमनली ट्राइसोमी 16 मिलेगी और मोनोसोमी एक्स मिलेगा. ओके ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस यूजली एनाटॉमिकल डिफेक्ट से होते हैं, और क्योंकि ये एनाटॉमी का डिफेक्ट होता है तो ये बार बार होते हैं. Second trimester abortions are usually habitual or recurrent abortion. The definition of recurrent abortion is
three or more spontaneous abortion. Three or more spontaneous abortion. Okay. Now the anatomical causes, cervical incompetence. ठीक है, मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स. एनाटॉमिकल डिफेक्ट do the second trimester abortion. Most common anatomical defect which does cervical incompetence. cervix pregnancy को होल्ड नहीं कर पाता, प्रेगनेंसी बाहर आ जाती है अबॉर्शन में. ठीक है, या शॉर्ट सर्विक्स, इसको शॉर्ट सर्विक्स में. अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल आई है आपके पास कि मेरे पिछली 2-3 बार डॉक्टर साहब मेरे अबॉर्शन हो गए हैं, प्लीज़ कुछ करिए, इस बार मेरा ना हो. अगर नॉन प्रेग्नेंट है, यूजली होता नहीं है इंडिया में, अगर पर हो जाता है एक्सेप्शनली, कोई आता है आपको एक अच्छा पेशेंट मिल गया, आप यू आर लकी ना, देन यू विल पास नंबर 8 हेगार डायलेटर, और यू विल पास द पतला वाला फॉलिस कैथेटर नंबर 12 फॉर इट. ओके, अगर वो आराम से जा रहे हैं लूजली, हेगार डायलेटर बहुत मोटा होता है नंबर 8, अगर वो आराम से जा रहे हैं, इट मीन्स दिस इज अ पेशेंट ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस. Okay, we can also do hysterocervicography, but it is rarely done clinically, so it is not asked also. Okay, so treatment of it is cervical encerclast. आयनासेट में 22 में पूछा गया था. सर्वाइकल एनसेफलाइटिस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम लैश एंड ये लैश. ठीक है, ऐसी हाई एंड चीज़ें आयनासेट में पूछी जाती हैं, बट क्योंकि आया है तो हमारा एग्जामिनर भी पूछ सकता है, हम बैठे ही हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में सर्वाइकल एनसेफलाइटिस होता है तो उसका मेथड लैश एंड लैश है. अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जो कि नॉर्मली इंडिया में होता है, अगली बार प्रेग्नेंट होकर फीमेल आती है और फिर वो भागी भागी आती है, डॉक्टर साहब मेरे तो पिछली 2 बार अबॉर्ट हो गए थे, इस बार बचा लो मुझे. ठीक है, सो देन वी व्हाट वी विल डू, वी विल गेट ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड डन टू डायग्नोज वेदर दिस इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी और नॉट. इफ इन ऑन द ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड द सर्वाइकल लेंथ इज लेस देन, always remember this parameter, 2.5 centimeter. If the cervical length is less than 2.5 centimeter और lower cervix की shape Y, V या U बन रही है, इस शेप को कैसे, कौन से निमोनिक से याद करेंगे? ट्रस्ट योर वेजाइनल अल्ट्रासाउंड. कैसे बनती है शेप? ये देखिए, अगर ये यहाँ पे बेबी है, ठीक है, तो ये कौन सी शेप बनी? टी शेप बन गई ना, टी. और यूआर, और अगर ये खुलेगा तो कैसी बन जाएगी? वाई. ट्रस्ट योर, फिर बनेगी वी. ये और खुल गए, ठीक है, ये सर्विक्स हैं, दे आर गेटिंग ओपन. फिर इस तरह से यू बन जाएगी. यू का मतलब है मेम्ब्रेन्स बल्ज कर रही हैं. ठीक है, प्रेगनेंसी में अगर हमें इलेक्टिवली सर्वाइकल इंसर्क्लाज करना है तो मैकडोनल्ड्स और श्रॉटकर टेप से करते हैं, और अगर इमरजेंसी में करना है तो बेंसन एंड ब्रूम मेथड होता है. इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो उसकी मेम्ब्रेन्स बल्ज कर रही थी सर्विक्स में, उसको हम बेंसन एंड ब्रूम सर्वाइकल इंसर्क्लाज बोलते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस पूछे गए थे नीट PG22 में, तो आपको याद होनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो हम सर्वाइकल इंसर्क्लाज नहीं करेंगे, इसका मतलब है वी कैन नॉट प्रिवेंट प्रेगनेंसी. अगर ब्लीडिंग है, लोकल इन्फेक्शन है, फिर भी नहीं हम करेंगे. रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, देन अगेन वी कैन नॉट डू सर्वाइकल इंसर्क्लाज, डिलीवरी करनी पड़ेगी. एंड देन फीटल डेथ है, फीटल एनॉमली है, तो पेशेंट को सेव, बच्चे को सेव करके भी क्या करेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट एनाटॉमिकल डिफेक्ट इज यूट्राइन एनॉमलीज. इसको हम सब ने मुलेरियन डिफेक्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था. यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, सेप्टेट, यूट्राइन डायडल्फस, ये सारी एनॉमलीज जो हैं ये अबॉर्शंस करती हैं अगर ये सीवियर हैं. नॉट द माइल्ड फॉर्म्स दे डोंट डू. इनकी डायग्नोसिस हम हिस्ट्रोलैप्रो से करते हैं. सेकेंड नंबर पे है MRI और लास्ट में HSG. ओके, इन HSG क्योंकि सस्ती होती है तो इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, बट द 100% कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन इज हिस्ट्रोलैप्रो, और स्कोप्स डाल के सी विद योर आइज.
ट्रीटमेंट, इनको इन सारी एनॉमलीज को हमने ट्रीट अभी करना है अगर रेकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं। वन अबॉर्शन पे हमने इनको नहीं ट्रीट करना है। यूनिकॉर्नेट, बाइकॉर्नेट, यूट्राइन डायडल्फस, इन तीनों की मेट्रोप्लास्टी होती है, यूट्रस की वॉल रिपेयर होती है। सेप्टा में क्योंकि यूट्रस की वॉल तो ठीक होती है, इसलिए हम हिस्ट्रोस्कोप डाल के सेप्टा को रिसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज है, फर्स्ट कॉमन कॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शन का है एनाटॉमिकल एनॉमलीज, जिसमें सर्वाइकल एनॉमलीज और यूट्राइन एनॉमलीज अब बढ़ चुके हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है रिकरेंट अबॉर्शन का अपला सिंड्रोम। ओके, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, उसको ल्यूपस एंटीकोगुलेंट और अपला बोलते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। और जब ऐसा होता है तो उसको एंटीबॉडी सिंड्रोम बोलते हैं, अपला सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो स्पाइरल आर्टरीज जो है प्लेसेंटा को सप्लाई करती है, यूट्रस की आर्टरी, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो इसलिए बच्चे को ब्लड नहीं जाता, क्योंकि वहीं से ही बच्चे को ब्लड जाना होता है स्पाइरल आर्टरी से। तो बच्चे को जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो नहीं होता, तो बच्चे की डेथ हो जाती है ड्यू टू हाइपोक्सिया। हिस्ट्री से हमें पता चलता है, वो बोलेगी मेरे रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, ठीक है। IUGR हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड कॉज। IUD हो जाती है, सडन अर्ली ऑनसेट सीवियर प्री एक्लेंसिया हो जाता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाता है। सो दीज आर ऑल द कॉजेज इन प्रेगनेंसी। इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो अपला सिंड्रोम उसमें रिकरेंट थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन है, अपला एंटीबॉडीज चेक करवाएंगे और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट APTT को बढ़ा देता है, क्योंकि बार बार कोगुलेशन करवाता है ना, तो APTT बढ़ जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट होता है प्री कंसेप्शनल एस्प्रिन स्टार्ट कर देंगे अगर हमने डायग्नोज कर लिया उसको, और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन देंगे। वंस फीटल हार्ट रेट अगर आ गई है तो हम उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन देंगे। Hormonal causes, they can also cause abortion, luteal phase defect, hyperprolactinemia, hypothyroidism, they can also cause abortion. Infections जो abortion cause करते हैं उनमें प्लीज़ आप ध्यान देंगे, टेलीग्राम पे आप सबका तो मुझे 30% रिजल्ट ही मिल रहा है। टॉर्च हमेशा एक बार अबॉर्शन करता है, रेकरेंट अबॉर्शन नहीं करता। सिफिलिस से अगर अबॉर्शन होता है तो बार बार हो सकता है, टॉर्च के अंदर सिफिलिस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कैस्वोटिस लॉ फॉलो करता है, यानी एक बार हर बार प्रेगनेंसी का पीरियड ऑफ गेस्टेशन इंक्रीज करेगा। अगर एक बार 8 वीक पे अबॉर्शन हुआ है तो अगली बार 16 पे होगा, उससे अगली बार 32 पे होगा, इसलिए हर बार प्रेगनेंसी का गेस्टेशन इंक्रीज होता जाएगा और एक दिन नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो सिफिलिस का ये आप सब लोगों का ठीक होता है। कैस्वोटिस लॉ इज फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस। ओके, अब पढ़ते हैं हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के हिसाब से दो तरह के अबॉर्शन होते हैं। ब्लाइटेड ओवम, ब्लाइटेड ओवम का मतलब है कि एम्ब्रो नहीं बना, सिर्फ सैक बना, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब है प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी पर बीच में ही स्टॉप हो गई, टर्मिनेट हो गई, ठीक है, उसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। ब्लाइटेड ओवम भी एक तरह का मिस्ड अबॉर्शन है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका, उन्होंने यही बोला था सिर्फ गेस्टेशनल सैक बना है, एम्ब्रो नहीं बना, तो ये क्या है, उसमें ब्लाइटेड ओवम नहीं था, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है और सडन उसकी ग्रोथ बंद हो गई। क्लिनिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। अगर हम देखें एक अबॉर्शन जो है क्लिनिकली 4 टाइप्स में जाता है। नंबर 1 क्या है, पहले वो थ्रेट होता है, उसकी थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, सर्वाइकल ओस ओपन नहीं होती है, इस स्टेज तक हम अबॉर्शन को सेव कर सकते हैं। वी से इट एज थ्रेटेंड अबॉर्शन, वी से इट एज थ्रेटेंड अबॉर्शन। हेयर यूट्रस का साइज जो है वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन के बराबर होता है। PV पे ऑस क्लोज होती है, ऑस ओपन मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर करके उसको ओपन कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो अभी स्टार्टिंग स्टेज है, ऑस क्लोज होगी, ठीक है। पेन ब्लीडिंग हर तरह के अबॉर्शन पे होता है, ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है।
ठीक है। इसका ट्रीटमेंट होता है बेड रेस्ट और प्रोजेस्टेरॉन। थ्रेटन का ट्रीटमेंट होता है बेड रेस्ट और प्रोजेस्टेरॉन, और पीवी पे ऑस क्लोज्ड होगी, और यूट्रस का साइज पीरियड ऑफ गेस्टेशन के जितना ही होगा। अगर 12 वीक का यूट्रस है तो 12 वीक की ही प्रेगनेंसी होगी, वो कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो अंदर है तो उतना ही साइज होगा। इनएविटेबल अबॉर्शन में यूट्रस साइज बराबर होता है, लेकिन यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट कर करके ऑस को ओपन कर दिया। अब इसको हम बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है। यूट्रस की मायोमेट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब रिवर्स नहीं कर सकते। अगर यूट्रस का साइज इक्वल टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी है और ऑस ओपन हो गई है, नाउ वी कैन नॉट सेव दिस प्रेगनेंसी, दिस पेशेंट हैज़ टू बी डन डीएनसी। डीएनसी इसका ट्रीटमेंट है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन मतलब कुछ प्रोडक्ट्स निकल गए, कुछ पेंडिंग है, यूट्रस का साइज कम हो जाएगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स निकल गए हैं, ऑस ओपन होगी क्योंकि प्रोडक्ट्स तो तभी निकलेंगे जब ऑस ओपन होगी, तो इसका ट्रीटमेंट भी डीएनसी है। इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर दो, ठीक है। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या करते हैं, क्या होता है, सारा का सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन निकल गए हैं, यूट्रस का साइज एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी जितना हो जाता, नॉर्मल यूट्रस जैसा होता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जितना हो जाता है, ऑस क्लोज हो जाती है क्योंकि सब कुछ निकल गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है, जस्ट एश्योरेंस। चलिए, इंड्यूस्ड अबॉर्शन पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इस बार आ गया तो हैट्रिक हो जाएगी, पिछली 2 बार आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले किन किन इंडिकेशंस पे अगर पेशेंट कोई चाहता है हमें अबॉर्शन कर दो, तो 4 इंडिकेशंस हैं। अगर माँ की जान को कुछ खतरा है इस प्रेगनेंसी से तो हम अबॉर्ट करेंगे। अगर बच्चे को कोई एनॉमली है तो हम अबॉर्ट करेंगे। नंबर 3, अगर माँ का कोई सेक्सुअल मदर जो है उसका सेक्सुअल असॉल्ट का केस है तब हम करेंगे। और चौथा जो है फेल्ड कॉन्ट्रासेप्शन हो गया है तब हम करेंगे। लार्ज फैमिली के लिए कभी नहीं करना, क्वेश्चन बार बार आ चुका है। अगर कोई कहता है मेरी बड़ी फैमिली है तब नहीं करना, फेल्ड कॉन्ट्रासेप्शन है तो कर देना, ठीक है। अगर 20 वीक्स तक अबॉर्शन करना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैंने पुराने वाले नहीं लिखे हैं क्योंकि नए वाले ही पूछते हैं तो हम नए वाले ही याद करेंगे। 20 वीक्स तक 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP कैन डू फॉर ऑल द 4 इंडिकेशंस। 20 to 24 वीक्स में, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के लिए नहीं होगा अबॉर्शन, बट अबॉर्शन विल हैपन फॉर एनी मैटरनल डिजीजेस, fetal anomaly and sexual assault, and the permission has to be taken by 2 RMPs. They have to give the opinion whether this maternal disease is a maternal disease, sexual assault is a sexual assault case, fetal anomaly is a fetal anomaly or not. The second registered medical practitioner will verify, okay. And if there is a fetal anomaly then we can abort it unlimited, because some fetal anomalies are diagnosed in 3rd trimester. So MTP amendment 2021 has given this rule that fetal anomalies can be terminated at any period of gestation, but after 24 weeks a board will be formed by the state government, okay, and that board will see that whether this fetal anomaly is really a fetal anomaly diagnosed in this time and was not diagnosed before, then only that board gives the permission, okay. Have you got it? Okay. Methods of abortion, how we will induce the abortion, okay. So medical methods, they can be done up till 9 weeks. In India permission is only up till 7 weeks. So if we are aborting in less than 7 weeks, then we have to give misoprostol 400 microgram, sorry, tablet mifepristone, you all know this, 200 mg is followed by tablet misoprostol 400 microgram. And if the period of gestation is between 7 weeks to 9 weeks, then this tablet mifepristone 200 mg is to be followed by tablet misoprostol 800 mcg a microgram after 48 hours. अगर 7 वीक से पहले है तो मिसोप्रॉस्ट 400 देनी है, और अगर 7 वीक से 9 वीक के अंदर है तो हमने मिसोप्रॉस्ट 800 देनी है माइक्रोग्राम, मिफेप्रिस्टोन की तो 200 ही देनी है,
ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन कैन बी डन अप टिल 9 वीक्स, इन इंडिया परमिशन इज ओनली अप टिल 7 वीक्स। मिफिप्रिस्टोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एंटी प्रोजेस्टिन है, ये फीटस को किल कर देती है। मीजोप्रोस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये जो फीटस किल हो गया है उसको यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके उस फीटस को एक्सपेल कर देती है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा क्योंकि बड़ा हो जाता है तो हमें पहले कुछ ड्रग्स देने पड़ते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए, उसके बाद हम सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो जो ड्रग्स हम देते हैं सर्विक्स को सॉफ्ट करने के लिए या सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, तो वो होते हैं टेबलेट मिफिप्रिस्टोन 200 to 600 माइक्रोग्राम, और उसके बाद हम 48 आवर्स के बाद टेबलेट मीजोप्रोस्ट 400 माइक्रोग्राम 3 आवर्ली देते हैं 5 डोजेस के लिए, ठीक है। अभी मेरे साथ 2 बार बोलो, याद हो जाएगा। मिफिप्रिस्टोन 200 से 600, मीजोप्रोस 400, 3 4 5 है, मीजोप्रोस 400 हर 3 घंटे के बाद 5 डोजेस, मीजोप्रोस 400 हर 3 घंटे के बाद 5 डोजेस, मीजोप्रोस 400 हर 3 घंटे के बाद 4 डोजेस, ठीक है। ठीक है। अब अगर आईयूडी हो गई है तो कोई फ़ायदा नहीं है मिफिप्रिस्टोन देने का, क्योंकि यूट्रस तो पहले ही मर चुका है, सॉरी यूट्रस नहीं फीटस तो पहले ही मर चुका है, आईयूडी हो गई है। अगर मिस्ड अबॉर्शन है उस केस में हम मिफिप्रिस्टोन नहीं देते, क्योंकि मिफिप्रिस्टोन किल्स द फीटस, हियर मिफिप्रिस्टोन इज ऑलरेडी बीन किल्ड, सो वी गिव इट स्टार्टिंग डोज हम मीजोप्रोस्ट 800 वेजाइनली देते हैं, which is followed by tablet mesoprost 400 माइक्रोग्राम 3 आवर्ली फॉर 5 डोज, तब तक निकल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सक्शन इवैक्यूएशन कर देते हैं। मीजोप्रोस्ट के अलावा मीजोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है, इसकी जेल का नाम जेमोप्रोस्ट है, और डाइनोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा कार्बोप्रोस्ट है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं सर्वाइकल प्राइमिंग के लिए। सर्जिकल मेथड जो यूज़ हम करते हैं वो सक्शन इवैक्यूएशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वैक्यूम से भी हम कर सकते हैं, और एक मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर भी है, हमारे एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट है। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर हम MV सिरिंज से करते हैं, और उसके आगे हम कार्बन कैन्यूला लगा देते हैं। 4 बातें मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज की याद करनी है। इसकी कैपेसिटी 60 ml है, इसके अंदर प्रेशर 600 से 660 mmHg का होता है। 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक यूज़ कर सकते हैं। OPD प्रोसीजर है, पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता, PHCs में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो 9 हफ्ते तक क्या करना है, हमने मेडिकल मेथड यूज़ करना है, और 9 हफ्ते से 12 हफ्ते तक हमने MV सिरिंज से करना है, ठीक है। ओके। DNC भी कर सकते हैं। DNC में जो है हम क्यूरेट से पहले डायलेटर डाल के हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं, और फिर हम क्यूरेट से सारा बाहर निकालते हैं। तो क्यूरेट कई बार रप्चर हो जाता है, क्यूरेट कई बार यूट्रस को परफोरेट कर देता है, उस केस में हमें इमीडिएट लेप्रोटमी करनी है। जब यूट्रस परफोरेट हो गया है तो हमें वेट एंड वॉच नहीं करना है, इमीडिएट लेप्रोटमी करनी है। ये बहुत बच्चों का गलत होता है, आप गलत नहीं करोगे अगली बार, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगर DNC करते हुए क्यूरेट क्योंकि शार्प है वो परफोरेट कर गया है यूट्रस को आर पार कर गया है, तो हमने इमीडिएट लेप्रोटमी करके वो परफोरेशन को ठीक करना है, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा वो चला गया, वो अंदर जाता जाएगा, पूरा का पूरा क्यूरेट अंदर जाता जाएगा, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। सर्विक्स को डायलेट करने के लिए दूसरे तरीके भी होते हैं। लेमिनेरिया टेंट जो कि एक सीवीड है, ये भी सर्विक्स को डायलेट करती है। डायलेपन एक सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर हैं। इसके अलावा जो सर्जरी हम कर सकते हैं वो हिस्टोटमी करते हैं, इसमें हम यूट्रस पे इंसिजन दे देते हैं, ठीक है। जो पुराने मेथड्स भी हैं उनके जस्ट नाम पढ़ने हैं। इंट्रा एमनियोटिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वो सोल्यूशन सेलाइन, यूरिया, मैनिटोल कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्राइडिन लैक्टेट, इनके सिर्फ अपने नाम याद रखने हैं। ये कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। ये MBA सिरिंज है, दिस वन इज MBA सिरिंज,
दिस इज स्पॉन्ज, दिस इज ओवम फोर्सेप, ओवम। ये शार्प नहीं होता क्यूरेट की तरह, इसमें एक ये जगह होती है स्पून लाइक, तो ये इसमें फंस जाते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। ये ब्लंट है और इसमें लॉक नहीं होता। ये कार्बन कैन्यूला है। कार्बन कैन्यूला का उतना ही नंबर यूज़ करना होता है जितना पीरियड ऑफ गेस्टेशन प्रेगनेंसी का है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है दोबारा। ये इस तरह की शेप वाला ये जो है ये क्यूरेट होता है, ये रहा, ये क्यूरेट है। ये स्पेक्यूलम डाल के डीएनसी हो रही है। ये क्यूरेट जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर ले आएगा। ठीक है, ये हेगार डायलेटर्स हैं। ठीक है, हेगार डायलेटर नंबर 8 हम नॉन प्रेग्नेंट लेडी में टेस्ट करते हैं। ये जो है ये क्या है, ये वॉल्सेलम फोर्सेप है। ये सर्विक्स की होल्ड करने में काम आता है। ये सिम स्पेक्यूलम है। ये वेजाइनल पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने में काम आती है। ये जो है ये कस्कोस स्पेक्यूलम, आप सबको पता है और मुझे भी पता लग गया ये कि आप सब लोगों को पता है। ठीक है, दैट वाज ऑल इन द चैंटिंग सेक्शन। Hope you see you soon in the next chanting session part 2. Okay, that will be from the gynae section. Thank you. Have a nice day.